اچھا، تو سوال ہے کہ کیا ڈپریشن کا علاج بغیر ادویات کے ممکن ہے کہ نہیں؟ اٹ ڈپینڈز اپون دا کائنڈ آف ڈپریشن یو آر ہیونگ. ڈپریشن بہت مختلف اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے. سم تھنگ کالڈ بایولوجیکل ڈپریشن اور سم تھنگ کالڈ نان بایولوجیکل ڈپریشن. جو بایولوجیکل ڈپریشن ہے اس میں بایولوجیکل انڈیکس خراب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نیند خراب ہونا، کم بھوک لگنا، ویٹ لاس ہونا، صبح جلدی آنکھ کھل جانا نارمل ٹائم سے، صبح اٹھ کے بہت ایگزاسٹ فیل کرنا، فٹیگ فیل کرنا، اوور دا پیریڈ آف ٹائمس سوچنے میں کمی آنا، زیادہ سوچنا، چیزیں ریٹین نہ کر سکنا، میموری لوز ہونا، انرجی کم ہونا، اور کچھ کیسز میں سوسائڈ کے بارے میں سوچ آنا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں خیالات آنا. اب یہ تمام بایولوجیکل سمٹمز ہیں. اگر یہ سمٹمز زیادہ ہوں گے تو میڈیکیشن از پریفریبل. لیکن ہم عام طور پہ جتنے سمٹمز ہوں ان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر ڈپریشن. اس کا کرائٹیریا ہم نے سمٹم کاؤنٹ کر کے ہی ہم کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے 2 بیسک سمٹم ہیں، دے آر a loss in energy or interest in the things you were interested in. This is one of the main symptoms. And number 2 is the sadness of mood. For some reason, اگر آپ 1-2 ہفتے اداس ہیں، زیادہ دن اداس رہتے ہیں، یا آپ کی انرجی لیول کم ہو جاتا ہے اور آپ جو کام روز کر رہے تھے انٹرسٹ سے وہ نہیں کر رہے، اگر ان میں سے ایک سمٹم ہوگا اور باقی جو میں نے سمٹمز بتائے ان میں سے کچھ ہوں گے 2-3، تو یو ہیو اے مائلڈ ڈپریشن. اگر یہ دونوں سمٹم ہوں گے اور باقیوں میں سے بھی 2-4 سمٹم ہوں گے، دین یو ہیو اے ماڈریٹ ڈپریشن. اگر انرجی بھی کم ہے، سیڈنس بھی ہے اور باقی سمٹمز میں سے بھی 4-6 سمٹم موجود ہیں، اور خاص طور پہ اگر سوسائڈ کا بھی آپ سوچ رہے ہیں، اٹس کلیئر کٹ سیویئر ڈپریشن. ان کیٹیگریز کے حوالے سے ٹریٹمنٹ ہم مینیج کرتے ہیں. مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں وی ڈو ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو دا پرسن، وی ٹاک اباؤٹ تھنگس، واٹ از بادرنگ، کیا کیا حل ہو سکتے ہیں، کیا کیا حل نہیں ہو سکتے. A light exercise, 30-minute walk 5 times a week is theoretically equivalent to 1 tablet of antidepressant. سب سے بات کیا کرنی چاہیے؟ سائیکولوجیکلی تھراپی، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، کاؤنسلنگ، اس کا کتنا فائدہ ہے؟ ان کا اس کو فائدہ ہوگا who is psychological minded. Some people are psychological minded. وہ اپنی باتوں کو ایبسٹریکٹ ٹرمز میں سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور ان پہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. Everyone is not psychological minded. جب بات چیت کرتے ہو یوزلی what I do is کہ after an initial sitting of 1 hour, اس میں you have quite an idea کہ how the person is. If it's a severe depression but person is psychological minded and he insists کہ let me try psychological work and exercise, تو I might agree with him, yeah, okay, that's your choice, let's keep a close collaboration and let's work it out. اگر mild to moderate depression ہے، اس میں I would prefer to develop psychological mindedness, to create some thought writing, to sit and analyze about the thoughts. I would prefer that. پیشنٹ کو بھی میں قائل کرنے کی کوشش کروں گا, but I will offer both the options. Sometimes patient does not want to do a lot of thought process. They don't want to write their thoughts. Maybe they have never done it. Maybe they're not interested. They just ask you کہ بھائی وہ فلانا تو دوائی کھا کے فوراً ٹھیک ہو گیا تھا, تو I just want the medication. تو the patient, the customer, the service taker, he is essentially is the person who should make the decision. The doctor, the service provider, is basically to provide the information, the right information in understandable terms. اگلے کو آپ نے صحیح انفارمیشن دینی ہے.
आइडली खुद उसको पुश नहीं करना कि दवाइयां खाएं या थेरेपी की तरफ जाएं. अगर उससे डिसीजन नहीं हो रहा, आप उसको मजीद इंफॉर्मेशन दें और आस्क हिम व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम टेकिंग वन और द अदर डिसीजन. ठीक है ना. तो डिसीजन एसेंशियली पेशेंट का ही होगा और पेशेंट कैन चूज समबडी, वन ऑफ हिज पेरेंट्स और वाइफ और हस्बैंड और बहन भाई टू हेल्प हिम टेक द डिसीजन. कहीं कहीं होता है पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आप बताएं, व्हाट यू विल से आई विल डू इट. तो समटाइम्स एट द एंड जब आप देखते हैं कि सब चीजें आपने बता ली हैं, कर ली हैं, देन इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक, यू वांट टू गो दिस रोड. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की होगी, ही विल ओन इट, बट इन सम टाइम वी हैव टू हेल्प हिम आउट. तो वो इट्स काइंड ऑफ थिंग वी बोथ एग्री. या मैं चला जाऊँ साइकियाट्रिस्ट के पास या मैं चला जाऊँ साइकोलॉजिस्ट के पास. अब जो साइकियाट्रिस्ट है वो जाकर आपको दवाई दे देगा और जो साइकोलॉजिस्ट है वहाँ जाकर बातें कर लेगा. यही होता है सर. तो इसमें कभी पाकिस्तान में कभी देखा कि ऐसे कोई प्रैक्टिस कर रहा हो इस तरह की कि पहले पेशेंट से पूछे कि आपने दवाई खानी है या वैसे ही ठीक होना. ये तो नहीं कभी मैं सुना आज तक. देखें, अभी तक आपने सुनी सुनाई बातें हैं ना. दूसरा हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस में हों ये बातें, बट दिस इज हाउ इट शुड हैपन. वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट हाउ थिंग्स शुड हैपन. व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो मैं बात आपको कह रहा हूं, दैट इज द प्रैक्टिस विच इज सजेस्टेड बाय, लेट्स से, इंग्लैंड में गाइडलाइंस होती हैं जिसको कहते हैं नाइस गाइडलाइंस. नाइस, NICE, नाइस गाइडलाइंस. और वो गाइडलाइंस होती है तमाम इलनेसेस के बारे में कि हाउ विल यू प्रोसीड टू ट्रीट अ डिप्रेशन केस, हाउ विल यू प्रोसीड टू ट्रीट अ सुसाइडल केस, how will you proceed to manage an OCD case. तो अगर आप देखना चाहें ऑनलाइन, यू कैन सी दीज गाइडलाइंस और उनके ऊपर बड़ा क्लियर कट आपको यही इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि जनाब दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ डायग्नोसिस, these are the symptoms, these are the first line medications which you should be offered. In the first line it always has to be, let's say, one antidepressant which you can again talk with the patient. You can talk about the side effects, the patient can ask about their concern, and you can together choose one of the medication. You can choose how much duration it is needed. तो उनकी recommendation होगी, साथ आपने देखो ना, आपने information से link करना है ना. तो आपने देखा या नहीं देखा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. उस पर हम अभी नहीं कमेंट करते. होना इस तरह चाहिए, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप वैसे ही प्रैक्टिस करें द वे यू आर ऑट टू, जो बेस्ट प्रैक्टिस है. तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता जी मेरे एक्सपीरियंस में, आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है. मेरा अगर 17 साल का एक्सपीरियंस भी है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जहाँ पे लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, देखा गया कि ये दवाई बेहतर थी दूसरी से. हम रिसर्च पे चल रहे हैं ना. तो समथिंग कॉल्ड एविडेंस बेस्ड साइकेट्री, एविडेंस बेस्ड. तो आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए जितना आप चलोगे इस प्रैक्टिस के साथ, उतनी आपकी मदद होगी. यही इंफॉर्मेशन आपने पेशेंट्स को भी देनी है कि भाई यू हैव द राइट, यू कैन गो, यू कैन आस्क फॉर अ मेडिकेशन. आपको अगर डर लगता है, यू आस्क अबाउट द क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क. You can get more information, you can study online, doesn't matter. अगर आपको ज़्यादा पता है दवाइयों के बारे में, that is good. As a doctor, I like if somebody comes with the information and we sit down and we discuss about the side effects, we discuss about what could be a right possibility. देखो दुनिया में तो उन्होंने लिखा है ना कि कितनी दवाइयाँ होनी चाहिए. A best prescription, if you have 2-3 illnesses, should not be more than 3 to 5 medications. क्योंकि number of medications बढ़ाने से the burden of side effect gets bigger. और इसी वजह से अक्सर लोग घबराते हैं दवाई शुरू करने से पहले कि सर वो फलाने को मसला था तो वो तो हर वक्त he was drowsy, he couldn't leave. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग सुनते हैं कि जो
दवाई पे लग गया वो बस लग गया, जो दवाई शुरू कर दी वो कभी नहीं छूटती, जिसने दवाई शुरू की बस उसका बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना. अब ये बातें बहुत कॉमन है एंड वी ट्राई टू डिसिपेट देम. और मैं आप लोगों से भी ये चाहूँगा कि जब आप इसके बारे में पढ़ोगे खुद तस्दीक करोगे कि वाकई ऐसा लिखा हुआ जैसे मैं कह रहा हूँ. क्या असर आता है, गोली से भी असर आ जाता है, क्या बातों से भी असर आ जाता है, ठीक है ना. या उसको आप क्राइटेरिया शो करते हो कि मतलब द पर्सन इट्स अ वेरी, दिस इज एन आर्गूमेंट यू कांट टॉक अगेंस्ट. एक बंदा है जो सुसाइड अटेम्प्ट करके आ रहा है. सो आई हैड दिस पेशेंट हु केम, उसने कहा जी मैंने 15 गोलियां पैराडोल की खा ली, बट समहाउ आई गॉट सेव्ड. सो दिस वाज द लास्ट थिंग दैट पर्सन कुड हैव डन. अगर वो बच गया किसी ना किसी तरह. नाउ वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड सुसाइड असेसमेंट. हाउ मच रिस्क इज देयर दैट द पर्सन इज गोइंग टू अटेम्प्ट अनदर कॉज, अनदर अटेम्प्ट. तो उसमें जब when you talk about the risk factors, क्या क्या हो सकता है क्या क्या, तो finally it's easier to convince them कि भाई this is a time, if you can develop a trust, if you can convince them with scientific evidence, they will listen to you. कोई कोई होता है 10 में से एक जो नहीं करता, तो उसमें भी आपने ये नहीं कहना कि भाई मेरे पास दवाई नहीं खानी तो नहीं आना. उन्हें को I respect your decision, but let's keep a close contact. If you have any problem, feel free to come in. I will be there to help you out.